નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારું દરેકનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી. હિન્દીમાં આપણે પાઠ 4 સુધી ભણી ગયા છીએ. હવે આપણે પુસ્તકમાં જોઈએ તો પાઠ 4 પછી પુનરાવર્તન 1 આપેલું છે. તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની હિન્દીની પુસ્તક સાથે લઈને બેઠશે અને પુનરાવર્તન 1 છે તે ખોલશે. તો પેજ નંબર 30 ઉપર પુનરાવર્તન 1 આપેલું છે. તો તેમાં જોઈએ તો प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. એટલે કે નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા છે તેના જવાબ એ કોષ્ટકમાં આપેલા છે. તો આપણે સાચો જવાબ છે તે ગોતીને લખવાનો છે. તો એમાં આપણે જોઈએ 1 નંબર, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं. तो एमा आवशे घर. सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं. नंबर 2, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल न गया. तो एमा आवशे वह. रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल न गया. नंबर 3, मीना और जैमिनी खाली जगह जा रहे थे. तो एमा आवशे बाजार. मीना और जैमिनी बाजार जा रहे थे. नंबर 4, मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला. तो एमा आवशे बिच्छू. मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला. नंबर 5, शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया. तो शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया. હવે જોઈએ આપણે પ્રશ્ન 2. પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए. तो એમાં છે પ્રશ્ન 1, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है. तो एमा उत्तर आवशे मैंने इन कहानियों का पठन किया है. दयालु शिकारी, बातूनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी और समझदार नन्ही. प्रश्न 2, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए. तो एमा तमारे તમે જે કહાની પઢી છે તે તમારે રફબુકમાં લખવાની છે. એટલે કે તમે જે કહાની વાંચી હોય તે કહાની તમારે લખવાની છે. એટલે ઉપરની જે કહાની તમે કીધું ને કે કઈ કઈ કહાની વાંચી છે, તો કે દયાલુ કે શિકારી, બાતુની કછુઆ, પ્યાસા કૌવા, કૌવા ઓર લોમડી, સમજદાર નન્હી. તો આ બધામાંથી તમારે કોઈ પણ એક જ લખવાની છે, બધી નથી લખવાની. તો એ કહાની તમારે અહીંયા લખવાની છે પ્રશ્ન 2માં. પ્રશ્ન 3, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया. तो एमा जवाब आवशे शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी. शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया. वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया. इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया. प्रश्न 4, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है. तो एमा जवाब आवशे हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे. हम सब में समता और ममता की भावना जगाए. हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें. प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है.
प्रश्न 5, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? तो एमां आवशे, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था, उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 3. એમાં છે, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाइए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। એટલે કે નીચે જે અક્ષર આપ્યા છે તો તે અક્ષર ઉપરથી ચાલુ થતાં આપણે 5-5 શબ્દો બનાવવાના છે. તો આપણે જોઈએ, પહેલો અક્ષર છે ચ, તો એના પરથી આપણે 5 શબ્દ બનાવવાના છે અને તે શબ્દ પરથી આપણે વાક્ય બનાવવાનું છે. તો હું તમને એક ઉદાહરણ આપું છું, બાકી અક્ષરમાંથી તમારે રફ ઘરકામમાં બીજા બનાવવાના છે. તો પહેલો અક્ષર છે ચ, તો એમાંથી આપણે પહેલાં શબ્દ બનાવીએ ચમેલી. તેનું વાક્ય બનશે, चमेली का फूल खूब खुशबूदार होता है। बीजू જોઈએ चक्की, तो चक्की से अनाज पीसा जाता है। पछी चतुर, तो रमेश चतुर लड़का है। चंपा, तो यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, तो चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो आपणे जोयुं के च अक्षर परथी आपणे शब्दों बनाव्या अने शब्दों परथी वाक्यों बनाव्या। तो एवी रीते ज तमारे अक्ष, त अने भ ए अक्षरों परथी शब्दों बनाववाना छे अने तेना परथी वाक्यों बनाववाना छे। हवे आपणे जोईए प्रश्न 4. तो तेमां छे समान तुक यानी कि प्रास, समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। तो जेमां के જેમાં સમાન પ્રાસ આવતો હોય તેવા આપણે શબ્દો બનાવવાના છે. તો એમાં પહેલું છે સામાજિક, તો એવી રીતે કયું બીજું બનશે? તો એના પરથી સમાન એવું જ આપણે બોલવામાં આવતું હોય એવું બનશે પ્રામાણિક, સાંસારિક, પારિવારિક. પછી બીજું આપ્યું છે માનવતા, તો એમાં જ એવું જ પ્રાસ દર્શાવતા બીજા શબ્દો બનશે દાનવતા, સજ્જનતા, સ્વતંત્રતા. પછી ત્રીજું આપ્યું છે ભલાઈ, તો બુરાઈ, હવાઈ, જુદાઈ. પછી 4 નંબર છે ગભરાહટ, તો એમાં આવશે ખડખડાહટ, સરસરાહટ, ફડફડાહટ જેવા શબ્દો બનશે. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 5. गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए. એટલે કે નીચે છે તે અંકોમાં આપ્યા છે તેને શબ્દોમાં લખવાનું છે અને શબ્દોમાં છે તેને અંકોમાં લખવાનું છે. તો એમાં પહેલું છે નવડે છગડે એટલે કે 96. પછી બીજું છે છગડે સાતડે એટલે કે 67. ત્રીજું છે પાંચડે એકડે એટલે કે 51. ચોથું છે 2 આઠડા એટલે 88. પછી પાંચમામાં લખ્યું છે 78, તો એમાં આવશે સાતડે આઠડે. છઠ્ઠામાં છે 57, તો એમાં આવશે પાંચડે સાતડે. સાતમામાં છે 69 એટલે કે છગડે નવડે. આઠમામાં છે 97 એટલે કે એકડે નવડે સાતડે એટલે 97. હવે આપણે જોઈએ પ્રશ્ન 6. तो एमां छे निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी एटले के विलोम शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. एटले के नीचे आपेला शब्दोना विरोधी अर्थ लखो अने तेनो वाक्य में प्रयोग करो. तेमां पेलुं छे स्वच्छ, तो स्वच्छनो विरोधी शब्द थशे अस्वच्छ. तेनुं आपणे वाक्य जोईए, यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है. नंबर 2 देश,
તો એનું વિરોધી બનશે વિદેશ. તો પિતાજી વિદેશ ગયે હુએ હે. નંબર 3 પ્રિય, તો એમાં આવશે અપ્રિય. એનું વાક્ય બનશે બુરે કામ વ્યક્તિ કો અપ્રિય બના દેતે હૈ. નંબર 4 એમાં આવશે અધિક, તો એનું વિરોધી થશે કમ. તો વાક્ય બનાવીએ ચાય મેં શક્કર કમ હૈ. હવે આપણે પ્રશ્ન 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. એટલે કે નીચેના શબ્દોને સમાનાર્થી શબ્દ લખો અને તેનો વાક્યમાં પ્રયોગ કરો. તો એમાં પેલું છે સૂર્ય. તો સૂર્યને આપણે શું કહીએ? રવિ. તો આપણે એનું વાક્ય જોઈએ. दिन में हमें रवि प्रकाश देता है. नंबर 2 भूमि, तो एनु थशे जमीन. यहाँ की जमीन उपजाऊ है. नंबर 3 में छे प्राण, तो प्राण एटले जान. एनु वाक्य जोईए. दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई. प्रश्न 4 सहसा एटले अचानक. एनु वाक्य बनशे चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई. तो આપણે અહીંયા સમાનાર્થી વિરોધી શબ્દ જોયા અને તેના વાક્યો બનાવ્યા. હવે જોઈએ પ્રશ્ન 8. એમાં છે નીચે दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 વાક્ય लिखिए. એટલે કે નીચે જે આપણે ચિત્ર આપેલું છે આ ચિત્ર, તે ચિત્ર પરથી આપણે 8-10 વાક્ય બનાવવાના છે. તો જોઈએ આપણે વાક્ય. तो इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है. पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है. नदी के दोनों किनारों पर बरगद के वृक्ष है. नदी में 3 बतखें तैर रही है. बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है. एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है. एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है. 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं. एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है. 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है. एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर एक टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं. एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है. एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है. मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है. मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है. उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है. दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है. बरगद में पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है. नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज़ की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है. दूर दूर गांव की झोपड़ियाँ दिखाई दे रही है. तो આપણે અહીંયા ચિત્ર પરથી આ આપણે વાક્યો બનાવ્યા. હવે છે પ્રશ્ન 9. आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में ट्यूब पंचर हो जाती है. इस घटना का वर्णन कीजिए. तो आ तमारे होमवर्क में छे. अने प्रश्न 10 चित्र के आधार पर कहानी लिखिए. तो आया छे ए मगर अने वांदरानी सरस मजानी एक कहानी छे. ए तमारे चित्रना आधारे लखवानी छे. तो आ तमारे जाते करवानुं छे. तो आपणे पाठ्यपुस्तकमां पुनरावर्तन एक पूर्ण कर्युं. तो दरेक विद्यार्थीए पुनरावर्तन एक रफबुक में सारा अक्षरे व्यवस्थित लखवानुं छे अने फोटा पाडीने होमवर्क तमारा क्लास टीचर ने मोकलवानुं छे.